हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गिटहब के इश्यूज टैब को। नाउ व्हाट इज दिस इश्यूज टैब? इट इज अ प्लेस फॉर पीपल टू पोस्ट देयर इश्यूज. Now, what is an issue? As the name says, an issue can be a problem, can be a solution, can be a bug, or can be a suggestion as well. तो एज यू नो दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाय कम्युनिटी. पूरा कम्युनिटी उसको यूज कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है उसके प्रॉब्लम्स को. नाउ जब बग्स आर रिपोर्टेड, लाइक पीपल दे एक्सपीरियंस बग, दे जस्ट राइट एन इशू इनटू दिस इशू टैब. नाउ ये इशू टैब जो है वो पूरे दुनिया को विजिबल है. सब कंट्रीब्यूटर्स कैन सी दिस इशू टैब. इट इज पब्लिक. सो व्हेन दे सी दिस इशू टैब, दे कैन कम अप विद अ सोल्यूशन. लाइक मैंने ये इशू देख लिया, यहाँ पे कुछ थीम का प्रॉब्लम है. तो अगर मुझे लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, सो आई कैन मेक एन अपील दैट आई कैन सॉल्व दिस एंड असाइन दिस इशू टू मी. नाउ द ओनर्स ऑफ द रिपोजिटरी कैन जस्ट look at your comment and assign that issue to you. Now it is your responsibility to solve the problem. आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है एंड यू हैव टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. इफ योर सोल्यूशन इज गुड इनफ, they can just integrate a solution into the code base. So that is how the GitHub issue tab helps the contributors to contribute to a project and make it better. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इशू टैब कहाँ होता है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं. हम लोग इश्यूज क्रिएट करना सीखेंगे, उनको असाइन करना सीखेंगे. So let's get straight into it. Now let's explore a real life open source project and see how the issues tab is working there. For example, let's go to MUI, that is a material UI repository. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कोड अवेलेबल है. यू हैव द अबाउट सेक्शन एंड एवरीथिंग एज एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी. यहाँ पे यू कैन सी द इश्यूज टैब. Now with issues टैब में आप देख सकते हो 1.2 थाउजेंड इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं which are open right now. And as you can see 15,951 issues are closed. यहाँ पे issues are of all type. आप देख सकते हो starting from styled a function does not accept arrays. Select the MUI plus next examples don't run on stack blitz. So all kinds of issues are reported here. यहाँ पे आप देख सकते हो tags भी है for better filtering. आप कोई भी issue को open कर सकते हो since it is available publicly and anyone can access it. You can read the issue. The main thing of this tab is it can be used as a forum as well. यहाँ पे आप discussions भी कर सकते हो. Like you can put an issue, आपको ये problem है, people can reply to it. Like they can give you a solution, they can give you suggestions. Those things are also possible here. यहाँ पे एक और important चीज है, that is the assignees section. यहाँ पे आप देख सकते हो this user has been assigned with this issue. In the same thread, you can see that when this person was assigned this issue. So जब issues open होते हैं, you can actually go and comment on those issues, and the owner may assign you the issue. After the assignment is done, you can start working on it, and then you can contribute to it. That was a real life example of issues, of how issues are created and how they work. Now let's see how we can create our own issues. यहाँ पे एक public repository मैंने open करके रखी है, which is an Next.js portfolio. As you can see in the issues tab, I can create my own issue. For example, मैं इस project को use कर रहा हूँ and I find some kind of a problem, like say problem with the dark theme. I can write a description to it, dark theme not working, and I can submit this issue. Now this issue has been submitted and it is publicly visible to everyone. The owner can see it as well as the users of this repository can see this issue. Now let's go to the owner's account. Like this is the owner's account, the one who actually owns this repository. As you can see, यहाँ पे अपना issue आ चुका है, problem with the dark theme. Now I as a owner can see this issue. मैं इस पे comment डाल सकता हूँ कि हाँ ऐसा problem है, इसका solution ये है, आप ये कर सकते हो. And there is an option to assign this issue. As you can see, since pages 0 to 1 के account से मैंने इस पे comment किया है, I can be assigned to this issue as well. तो मैं यहाँ पे इस account को assign कर दूंगा. Once I do this, you can see the assignees as pages 0 to 1 who is assigned to this issue. वहीं पे यहाँ पे notification create हो गया, तो इसी thread में आ चुका है. Now this is an indication that this account pages 0 to 1 can now start working on this issue and can solve it.
आफ्टर दैट जैसा हम लोग ने देखा लास्ट वीडियो में, पूरा प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा. ही हैज टू fork it, he has to create a pull request, and after the pull request is approved and merged, the owner can close this issue. Now when this issue is closed, it is removed from the issue stack. So that was the basics of how हम लोग issues create कर सकते हैं, how issues assign कर सकते हैं, and how issues are closed. तो इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज क्रिएट कैसे होते हैं, असाइन कैसे होते हैं, एंड हाउ दे हेल्प इन मैनेजिंग द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.